What happened to Jimmy Hoffa? Hard to believe, but it's been nearly 5 decades. We're talking 50 years since the labor leader vanished. For nearly half a century, the mystery of Jimmy Hoffa's disappearance haunted America like a ghost that refused to rest. From mob hangouts to government offices, whispers of his name echoed through time. Where is Hoffa? Was he murdered by his own allies? Did he cross the wrong people in organized crime? Or had the government itself played a role in silencing him forever? His fate became one of the most enduring riddles in American history. Year after year, search teams scoured fields, garages, warehouses, and even swamps in pursuit of his remains. FBI files stacked higher than a man's head, newspapers dedicated front pages to wild theories, and informants popped up with confessions that collapsed under scrutiny. Yet every effort ended the same way: frustration, disbelief, and another dead end. Then, against all odds, something shifted. After decades of empty trails, Hoffa's body has finally been discovered. The story behind this breakthrough is as chilling as it is improbable. Not high-tech surveillance, not an FBI task force with millions of dollars. Instead, the truth came to light because of seemingly ordinary people who refused to let the case die. Their discovery has reopened old wounds, reignited public fascination, and stirred up emotions long buried. Because Hoffa's disappearance was never just about one man, it symbolized corruption, betrayal, and the hidden power of the mob in 20th century America. Now, at last, we can piece together the final puzzle. What truly happened to Hoffa? Where had he been all these years? And how did the answers hide in plain sight beneath a place no one ever thought to look? This is the story of Jimmy Hoffa's body finally being found, the long chain of events that led to its discovery, and the shadowy trail of secrets that still lingers even now. To understand why Hoffa's case matters, we have to revisit his legacy. Jimmy Hoffa was no ordinary union leader. Rising through the ranks of the International Brotherhood of Teamsters, he became one of the most powerful men in America. His influence extended far beyond labor rights. He controlled vast pension funds, forged close ties with organized crime, and wielded political clout that rivaled senators and governors. But power of that magnitude breeds enemies. Federal authorities under Robert F. Kennedy saw Hoffa as a dangerous man. Investigations into corruption and mob connections hounded him throughout the 1960s. Eventually, Hoffa was convicted of jury tampering and fraud, serving several years in prison before gaining an early release. Even then, conditions of his parole prohibited him from union leadership, a punishment he never truly accepted. By the mid-1970s, Hoffa was plotting his comeback. He arranged a meeting in Detroit with mob associates, hoping to broker peace and regain influence. On July 30, 1975, he drove to the Machus Red Fox restaurant and vanished without a trace. His car was later found abandoned. No signs of struggle, no goodbye call, just silence. From that day forward, America was gripped. Every theory imaginable surfaced. Some claimed Hoffa was buried beneath a New Jersey highway. Others swore he had been chopped up and sent to Japan inside steel drums. One story insisted he had been cremated within hours of his death. Each new lead produced headlines, but none produced Hoffa. His absence transformed into a legend. For decades, comedians made jokes, conspiracy theorists spun tales, and crime shows revisited the case endlessly. Hoffa was no longer just a man, he was a symbol of mystery itself. Yet beneath the spectacle, one truth remained. Somewhere out there, his body had to be resting. The question was, where? By 2019, most of the world had moved on. New generations knew Hoffa's name only as a riddle their parents once obsessed over. Then came Martin Scorsese's film The Irishman. Based on the memoir of mob hitman Frank Sheeran, the film painted a vivid picture of Hoffa's final hours. According to Sheeran, he himself had killed Hoffa in a Detroit house, then arranged for the body to be swiftly cremated. It was a chillingly simple solution to a mystery that had tormented investigators for years. The film reignited interest everywhere. News outlets revisited the case. Podcasts, dedicated episodes, and classrooms debated the truth. For many, The Irishman offered closure. But for others, it was too neat. Investigators quickly tore apart Sheeran's account.
The Detroit house he identified was tested with luminol, revealing faint traces of blood. But none of it matched Hoffa. No DNA, no weapon, no solid evidence. Sheeran's credibility, shaky to begin with, collapsed further. Still, the movie did something no police report ever could. It brought Hoffa back into the spotlight. Amid this wave of renewed fascination, a little-known nonprofit group called the Case Breakers decided to re-examine the mystery. The team consisted of retired detectives, intelligence officers, and forensic experts, people who thrived on impossible puzzles. Then came the clue that changed everything. When a retired Wisconsin police officer died, his family uncovered a bizarre keepsake among his belongings. A single playing card, the Ace of Spades. On it, scrawled in hurried black ink, were 4 cryptic words: Milwaukee. Third base, old stadium. 1995. To the family, it seemed like nonsense. But to the case breakers, it was worth investigating. Slowly, the scribbled message began to unravel. The Ace of Spades led investigators to Milwaukee County Stadium, home of the Brewers until its demolition in 2001. The words third base were specific enough to suggest a location, not just a metaphor. Using archived satellite imagery from the late 1990s, investigators zoomed in on the stadium grounds. Near the third base line, they spotted something peculiar, a patch of clay that looked disturbed, as if it had been dug up and hastily covered again. It was an eerie discovery. For decades, thousands of fans had cheered over that very spot, never suspecting what might lie beneath. When the stadium was demolished, a new complex, American Family Field, was constructed on the same footprint. Part of the old land, including the area where third base once stood, was repurposed into a youth baseball field and parking lots. Children now played baseball where Hoffa might have been secretly buried. The case breakers refused to dismiss the clue as coincidence. To them, the detail was too specific to ignore. Why would a dying police officer leave such a cryptic message if it meant nothing? The Ace of Spades itself, long a symbol of death and finality, seemed almost poetic. So the team launched a full-scale operation. Soil analysts, forensic experts, and ground-penetrating radar specialists joined the effort. What they found would shock them. At first, the scans revealed nothing unusual. The field looked ordinary, uniform layers of dirt and clay. Skeptics on the team wondered if they were chasing another dead end. But as the radar probed deeper, faint anomalies appeared. Small disruptions in the soil pattern, disturbances where there should have been none. Subtle inconsistencies that hinted the ground had once been tampered with. The more data they gathered, the stranger it looked. In certain sections near where third base had once been, the soil layering was unnatural. It wasn't the smooth, consistent buildup of years of groundskeeping. Instead, it appeared someone had dug deep, then deliberately sealed the hole with different material. These anomalies weren't enough to declare victory, but they were impossible to dismiss. The investigators' excitement grew. They could almost feel history pressing in around them. Had they truly found the place where Hoffa's story ended? Piece by piece, the puzzle took shape. What began as a cryptic playing card was transforming into one of the strongest leads the Hoffa case had ever seen. Then came the breakthrough. As the radar swept directly over the location marked by third base, a dense, compacted layer of clay revealed itself. It was sharply outlined, foreign to the natural earth around it. Compacted clay doesn't appear there by chance. It's deliberate. Used in landfills to slow decomposition, it serves one grim purpose: preservation. Finding it here, beneath a ballpark, sent chills through the team. Digging into construction records, they found no explanation for why that soil should exist. No renovations, no utility work, nothing. The anomaly was right where the tip had said to look, and nowhere else. It was impossible to ignore. For decades, investigators searched fields and garages across the country. Yet here, beneath a baseball diamond where kids played every summer, may have been the answer all along. The case breakers were cautious. Radar wasn't proof, but the evidence was undeniable. Someone had buried something deliberately at third base, sealing it with clay to prevent discovery. And the most logical explanation? Jimmy Hoffa. So had the mystery finally been solved? Not quite. The clay anomaly, while damning, still wasn't a body. Excavation would be required to confirm.
Yet, with the land now serving as part of a public ballpark and parking lot, digging wasn't so simple. Legal barriers, city approvals, and public safety concerns stood in the way. Still, the implications are staggering. If Hoffa's body rests beneath that ground, then one of history's greatest mysteries has been hiding in plain sight for nearly half a century. The case that refused to die is once again alive, and with it comes the same old questions. Who ordered Hoffa's death? Why choose a ballpark as the burial site? Was it mob retaliation, political silencing, or both? And perhaps most chilling, how many people have known all along, yet carried the secret to their graves? Even now, the legend of Jimmy Hoffa continues to loom over American history. His life was about power, ambition, and betrayal. His death became folklore, and his discovery, if confirmed, will be one of the most shocking revelations in modern crime. For now, one truth remains. The ground beneath that ballpark may hold answers more chilling than anyone dares imagine. Jimmy Hoffa's rise to power was inseparable from the shadow of the mob. To understand why his disappearance was inevitable, we need to peel back the layers of his relationship with organized crime. The Teamsters Union under Hoffa controlled billions of dollars in pension funds. Those funds became a lifeline for the Mafia. They were used to finance casinos in Las Vegas, real estate ventures, and countless underground enterprises. In return, the mob provided Hoffa with muscle, protection, and influence. It was a symbiotic relationship, until it wasn't. Hoffa's prison sentence weakened him, and by the time he was released, the underworld had moved on. Younger, hungrier crime bosses saw him as a liability. His attempts to reclaim leadership of the Teamsters threatened to disrupt the delicate balance the Mafia had built. Rumors swirled that the Detroit mob, specifically the Giacalone brothers, were tasked with dealing with him. Other whispers pointed to New Jersey's Genovese family. Theories multiplied, each darker than the last. What makes the mob angle so convincing is the sheer number of insiders who hinted at it. FBI wiretaps caught mobsters joking about Hoffa's disappearance. Former associates claimed Hoffa had been taken care of, yet no one ever produced proof. That was the mob's genius. Silence, intimidation, and secrets taken to the grave, and then there's the chilling possibility of the burial site itself. Why a baseball stadium? On the surface, it seems absurd. But for the mob, it may have been brilliant. Stadiums undergo constant renovation, maintenance, and eventually demolition. What better way to ensure a body is hidden forever than to bury it beneath a place destined to be bulldozed and rebuilt? The mob didn't just kill Hoffa to eliminate a man. They erased him to send a message. No one, no matter how powerful, was untouchable. And the whispers of that message still echo today. While the mob theory dominates public imagination, another layer of intrigue lingers. Government involvement. Could Hoffa's disappearance have been more than organized crime? Was it, in fact, a conspiracy sanctioned, or at least tolerated by those in power? During the 1960s, the federal government viewed Hoffa as a national threat. Robert F. Kennedy made it his personal mission to bring him down, branding Hoffa as corrupt, dangerous, and tied to organized crime. The animosity between them bordered on obsession. When Hoffa vanished in 1975, some wondered if the government had simply let it happen. Declassified documents reveal the FBI was aware of threats against Hoffa, yet did little to protect him. Was this negligence or complicity? Even darker theories suggest intelligence agencies may have had their own reasons to see Hoffa disappear. His control of the Teamsters' pension funds gave him leverage over industries vital to the U.S. economy. Some speculate that Hoffa's knowledge of mob financing and political corruption made him too dangerous to live. Over the years, requests to declassify certain Hoffa files have been denied. Entire pages of FBI reports remain blacked out. Why? If Hoffa's murder was solely a mob affair, why keep secrets 50 years later? Theories abound. Did Hoffa know about CIA Mafia collaborations during the Cold War? Did he threaten to expose politicians who had accepted mob money? Or did federal agents simply see his death as a convenient solution to a problem they couldn't control? The truth may never emerge. What we do know is this: Hoffa's disappearance was investigated by the most powerful government agencies in America,
And yet, despite their resources, the mystery endured. Either the government failed spectacularly, or they never wanted the truth revealed in the first place. In contrast to the failures of law enforcement, the case breakers represent a different kind of determination. Formed by retired detectives, intelligence officers, and forensic experts, the group thrives on solving the unsolvable. They are not bound by bureaucracy or politics. They pursue truth for its own sake and for the families who still wait for closure. Over the years, they've investigated everything from the Zodiac killer to Cold War espionage cases. Their reputation is one of persistence and creativity. In the Hoffa case, they brought fresh eyes. Instead of recycling old theories, they followed the bizarre clue left by a dying police officer. To some, a scribbled playing card looked like a joke. To them, it was a treasure map. The case breakers combined archival research with modern technology. They studied old satellite photos, examined demolition records, and conducted soil scans with cutting-edge ground-penetrating radar. Every anomaly, every irregularity was cataloged and compared. What sets them apart is their tenacity. When authorities dismissed the tip, they pressed harder. When skeptics laughed, they doubled down. Their mission was simple: to uncover truth where others had given up. For them, the Hoffa case wasn't just about one man. It was about justice delayed for nearly 50 years. It was about proving that persistence, even without government backing, could uncover what entire agencies had failed to see. And as their findings at Milwaukee's third base suggest, they may have come closer than anyone else to solving America's most famous disappearance. The moment news broke of the possible discovery beneath Milwaukee's old stadium, the public erupted. True crime enthusiasts flooded social media with theories. Television anchors debated the evidence. Podcasts released emergency episodes. For older generations, the news felt surreal. Many had grown up hearing about Hoffa, watching investigators search empty fields and abandoned warehouses. To think that his body might finally be found after all these years stirred emotions they hadn't felt in decades. For younger people, it was a crash course in history. Suddenly, Jimmy Hoffa wasn't just a name in old textbooks or a punchline in late-night jokes. He was a flesh-and-blood man whose disappearance shaped American culture. The impact stretched beyond fascination. Union members reflected on Hoffa's complicated legacy. Some remembered him as a champion for workers' rights. Others saw him as corrupt, entangled with the mob. His rediscovery forced a reckoning with both sides of his story. Hollywood, too, took notice. Producers began discussing new documentaries, dramatizations, and exposés. Hoffa was trending again, proving that his legend still had power. Perhaps most poignant were the reactions from families connected to the case, children of mobsters, union members, and investigators. For them, the possibility of Hoffa's discovery wasn't entertainment. It was closure. A chance to finally put to rest the question that had haunted them for half a century. What happens next? That is the question now gripping investigators, journalists, and the public alike. If the anomalies beneath Milwaukee's old stadium are indeed Hoffa's remains, excavation will be required. But digging into a public ballpark is no simple task. Legal permissions must be granted, environmental concerns addressed, public safety ensured. Authorities face a dilemma: risk disturbing a site beloved by the community, or ignore the strongest lead in decades. The casebreakers continue to lobby for excavation, arguing that history demands it. For them, closure outweighs inconvenience. If Hoffa's body is found, it would be one of the greatest crime discoveries in modern history. DNA testing could confirm his identity. Forensic analysis might even reveal details of his death: gunshot wounds, blunt force trauma, or other signs. But confirmation would also raise new questions. Who exactly ordered the hit? Which mob family carried it out? Were government agencies complicit? And perhaps most unsettling, how many other secrets lie buried with him? Even if Hoffa is found, the legend may never fully die. His disappearance wasn't just about a body. It was about corruption, loyalty, betrayal, and power. Those themes still resonate today. The future of the Hoffa case lies in the hands of investigators willing to dig, literally and figuratively. Whether they succeed or fail, one truth remains certain: Jimmy Hoffa's story will continue to captivate, disturb, and inspire
long after his body is finally at rest. जिमी हॉफा का डिसअपीयरेंस सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं था। यह मीडिया की दुनिया का एक स्पेक्टिकल बन गया। 1995 के यूएस दिन के बाद जब हॉफा बगैर ट्रेस के गायब हुआ, न्यूज रूम्स में एक ऐसी रेस शुरू हुई जो आज तक रुकी नहीं। न्यूज़पेपर्स, रेडियो ब्रॉडकास्ट्स और टीवी एंकर्स एक ही सवाल बार बार पूछते रहे, वेयर इज हॉफा? हर नए दिन एक नई हेडलाइन लाता, हर टिप ऑफ को एक सेंसेशनल ट्विस्ट मिलता। अमेरिकन प्रेस ने हॉफा को एक फोल्क विलन और फोल्क हीरो दोनों बना दिया। कुछ पेपर्स उन्हें एक करप्ट गैंगस्टर के रूप में दिखाते, तो कुछ उन्हें एक मजदूरों के मेसाया के तौर पर। और फिर आई वो तस्वीरें जो हॉफा के लास्ट नोन साइटिंग्स को इमॉर्टल कर गई। रेस्टोरेंट पार्किंग लॉट के ब्लर्ड स्नैपशॉट्स, ग्रेनी सिक्योरिटी फुटेज और आई विटनेस स्केचेस। जहां एविडेंस कम था, वहां इमेजिनेशन ने जगह ले ली। 1970s और 80s में हॉफा की कहानी का मीडिया सर्कस और तेज हुआ। टैब्लॉइड्स ने रूमर चलाए कि उनका बॉडी फ्लोरिडा के स्वैम्प्स में है, या न्यू जर्सी के लैंडफिल में, या फिर मॉब ओन्ड फ्रीजर में डिकेड्स से प्रिजर्व्ड है। हर बार एक एक्सकवेशन या पुलिस रेड होती, मीडिया वंस उनसे पहले स्पॉट पर पहुंच जाती। और जब कुछ भी न मिलता, तो उसी डिसअपॉइंटमेंट को भी एक स्टोरी बना दिया जाता। हॉफा का नाम एक मिथ बन गया, जिसे सिर्फ फैक्ट्स नहीं बल्कि फैसिनेशन फ्यूल कर रही थी। हॉलीवुड भी पीछे नहीं रहा। टीवी मूवीज, क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज और फीचर फिल्म्स ने हॉफा की मिस्ट्री को और गहरा बनाया। जैक निकलसन स्टारर हॉफा 1992 ने एक फिक्शनलाइज्ड वर्जन दिखाया, जहां आर्टिस्टिक लिबर्टीज ने फैक्ट और फिक्शन की लाइन ब्लर कर दी। फिर डेकेड्स बाद मार्टिन स्कॉर्सेजे की द आयरिशमैन ने हॉफा की कहानी को दोबारा अलाइव कर दिया, एक नई जनरेशन को इस केस से इंट्रोड्यूस करते हुए। हर पोर्ट्रेयल ने मिथ को और जिंदा रखा, चाहे उसमें सच हो या सिर्फ सिनेमैटिक ड्रामा। मीडिया ने सिर्फ हॉफा को इमॉर्टल नहीं किया, उन्होंने अमेरिका के क्राइम कल्चर को भी रीशेप किया। हॉफा की कहानी एक ऐसी केस स्टडी बन गई जिसमें एक आदमी के डिसअपीयरेंस ने जर्नलिज्म, एंटरटेनमेंट और पॉप कल्चर के बीच एक परमानेंट ब्रिज बना दिया। और जैसे जैसे साल गुजारते गए, जिमी हॉफा एक नाम नहीं रहा, वो एक मेटाफोर बन गया उन सब मिस्ट्रीज के लिए जो कभी सॉल्व नहीं होती। हर लेजेंडरी स्टोरी के पीछे उन लोगों की कहानी होती है जो स्पॉटलाइट में नहीं होते। जिमी हॉफा की डिसअपीयरेंस ने सिर्फ अमेरिका को शेक नहीं किया, बल्कि उनके परिवार को भी लाइफलॉन्ग ट्रॉमा दे दिया। उनकी वाइफ जोसेफीन ने अपनी जिंदगी का आखिरी हिस्सा अनसर्टेनिटी में गुजारा। हर दिन एक नया रूमर, एक नया हेडलाइन, एक नया फॉल्स होप के साथ। शी डाइड इन 1980, कभी यह जाने बगैर कि उनके हस्बैंड के साथ असल में हुआ क्या। हॉफा के चिल्ड्रन के लिए यह और भी मुश्किल था। एक तरफ उनके फादर एक सेलिब्रेटेड लीडर थे जो मिलियंस ऑफ वर्कर्स के राइट्स के लिए खड़े रहे, दूसरी तरफ उन्हें एक सस्पेक्टेड मॉब विक्टिम के तौर पर याद किया जाता रहा। हर इंटरव्यू, हर इन्वेस्टिगेशन ने उन्हें दोबारा वही दर्द याद दिलाया। क्लोजर कभी नहीं मिला, लेकिन सिर्फ हॉफा का परिवार ही नहीं, बल्कि उन माफिया फैमिलीज के घर भी इस ट्रेजेडी से अफेक्ट हुए जो इस केस में सस्पेक्ट थे। कई मॉबस्टर्स की अपनी वाइव्स और बच्चे इस बात से परेशान रहे कि उनके घर के बुजुर्ग किसी बड़े क्राइम में शामिल थे। कुछ ने अपनी आइडेंटिटीज बदली, कुछ ने साइलेंस अपना लिया, और कुछ अभी तक उनके सीक्रेट्स को एक बर्डन के रूप में कैरी कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेटर्स और जर्नलिस्ट्स के फैमिलीज भी स्पेयर्ड नहीं रहे। डिकेड्स तक इस केस को फॉलो करते रहते हुए उनके अपने घर पर प्रेशर आता रहा। कुछ को थ्रेट्स मिले, कुछ की रेप्यूटेशंस डाउट के शैडो में आई, और इस सब के बीच एक चीज कांस्टेंट रही, एक एचिंग एम्प्टीनेस जो कभी फिल नहीं हुई। हॉफा की स्टोरी सिर्फ एक मिसिंग मैन की कहानी नहीं थी, ये डजन्स फैमिलीज की साइलेंट सफरिंग की कहानी भी थी। जब हॉफा डिसअपीयर हुए थे, फॉरेंसिक साइंस और टेक्नोलॉजी आज के लेवल पर नहीं थी। 1970s के इन्वेस्टिगेटर्स के पास लिमिटेड टूल्स द फिंगरप्रिंटिंग, आई विटनेस अकाउंट्स और प्रिमिटिव लैब टेस्ट्स। अगर हॉफा की बॉडी उस वक्त मिल जाती तो शायद उनका मर्डर कभी सॉल्व ना होता, क्योंकि फॉरेंसिक प्रूफ इतना एडवांस्ड नहीं था। लेकिन आज के एरा में चीजों ने ड्रामेटिक टर्न लिया है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडर जैसे टूल्स एक फील्ड के नीचे की लेयर्स तक देखा सकते हैं। सैटेलाइट इमेजरी पुराने कंस्ट्रक्शन साइट्स और डिस्टर्ब्ड सॉइल पैचेस रिवील कर सकती है। डीएनए टेक्नोलॉजी तो सबसे बड़ा वेपन बन गया है, एक टाइनी बोन फ्रैगमेंट भी एक आइडेंटिटी कंफर्म कर सकता है। द केस ब्रेकर्स और एफबीआई दोनों ही आज इन्हीं टूल्स का सहारा ले रहे हैं। ओल्ड एक्सकवेशन साइट्स दोबारा स्कैन की जा रही हैं और अनसॉइल एनोमलीज को रिचेक किया जा रहा है जो पहले इग्नोर्ड थी। डिजिटल एआई एल्गोरिदम्स एफबीआई के डिकेड्स ओल्ड फाइल्स को स्कैन कर रहे हैं।
पैटर्न्स और कनेक्शंस निकालने के लिए जो ह्यूमन इन्वेस्टिगेटर्स मिस कर गए थे। क्वेश्चन ये है क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजी एक ऐसी कहानी को सॉल्व कर पाएगी जो आधी सदी से ज्यादा पुरानी है, या फिर हॉफा के किलर्स इतने स्मार्ट थे कि उन्होंने सब कुछ इरेज कर दिया। हर नए एडवांसमेंट के साथ एक नया होप जगता है, लेकिन हॉफा के केस में हर होप एक नए डेड एंड से टकरा जाती है। जिमी हॉफा के डिसअपीयरेंस का सबसे बड़ा इम्पैक्ट एक इंटेंजिबल लेगेसी है, फियर। एक ऐसा दार जो यूनियंस, पॉलिटिशियंस और क्रिमिनल्स के दिल में बस गया। हॉफा की कहानी एक परमानेंट रिमाइंडर बन गई कि चाहे तुम कितने पावरफुल हो, तुम कभी अनटचेबल नहीं होते। यूनियन पॉलिटिक्स में हॉफा अभी तक एक कंट्रोवर्शियल फिगर हैं। कुछ उन्हें एक हीरो के तौर पर याद करते हैं, एक ऐसा लीडर जो मजदूरों के लिए खड़ा था। दूसरे उन्हें एक करप्ट मन के रूप में देखते हैं, जो मॉब के साथ खड़ा था और अपने ग्रीड के लिए कॉम्प्रोमाइज करता था। लेकिन चाहे हीरो हो या विलन, एक बात सबको माननी पड़ती है, उनकी कहानी एक वार्निंग है। अमेरिका के कल्चरल साइकी में हॉफा एक सिंबल बन गए, पावर के रिस्क्स और सीक्रेट्स के वेट का। कैसे एक आदमी जो एक टाइम पे प्रेसिडेंट के साथ खाना खाता था, अगले ही मोमेंट में इरेज कर दिया गया, जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। हॉफा का डिसअपीयरेंस अब सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं, ये एक लेसन है जो जनरेशंस को सिखाया जा रहा है। आखिरी सवाल जो सबके दिमाग में है, क्या हॉफा जैसा डिसअपीयरेंस आज के जमाने में पॉसिबल है? 2020s के डिजिटल वर्ल्ड में, जहां हर जगह सीसीटीवी कैमरास, जीपीएस ट्रैकिंग और सेलफोन सिग्नल्स होते हैं, किसी का बिना ट्रेस के वेनिश होना मुश्किल लगता है। लेकिन क्या यह इम्पॉसिबल है? विसल ब्लोअर्स, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स और करप्शन के खिलाफ खड़े होने वाले लोग अभी भी डेंजर में होते हैं। हर साल डजन्स केसेस रिपोर्ट होते हैं जहां लोग सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में गायब हो जाते हैं। डिफरेंस सिर्फ ये है कि आज सब कुछ इंस्टेंटली न्यूज बन जाता है और ट्रेस करना रिलेटिवली ईजियर होता है। फिर भी पावर के कॉरिडोर्स में साइलेंस करने के तरीके अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। हॉफा का केस एक टाइमलेस रिमाइंडर है कि सच बोलने का प्राइस कभी कभी जिंदगी भी हो सकती है। अगर एक नेशनल फिगर जैसे जिमी हॉफा इरेज किया जा सकता है, तो आम लोग का क्या होगा? ये सवाल ही हॉफा की कहानी को रेलेवेंट बनाए रखता है, एक ऐसा मिस्ट्री जो सिर्फ पास्ट का नहीं, प्रेजेंट और फ्यूचर का भी हिस्सा है। जिमी हॉफा की कहानी सिर्फ मॉबस्टर्स और यूनियन हॉल्स तक लिमिटेड नहीं थी, इसका एक हिस्सा वॉशिंगटन के कॉरिडोर्स ऑफ पावर में भी छुपा था। हॉफा एक ऐसा लीडर था जो पॉलिटिक्स में इक्वली फियर्ड और इक्वली नीडेड था। अमेरिका के लेबर यूनियंस मिलियंस ऑफ वर्किंग क्लास वोट्स कंट्रोल करते थे और हॉफा उनका किंग मेकर था। कोई भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, चाहे डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन, हॉफा की ब्लेसिंग लेना चाहता था। लेकिन जितनी बड़ी उनकी इन्फ्लुएंस थी, उतने ही पावरफुल दुश्मन भी बना लिए थे। 1960s के शुरुआत में हॉफा और कैनेडी ब्रदर्स के बीच का क्लैश इस वेब का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। रॉबर्ट एफ कैनेडी जब अटॉर्नी जनरल बन, तो उन्होंने हॉफा को पर्सनली टारगेट किया। आरएफके ने अपने गेट हॉफा कैंपेन को एक ऑब्सेशन बना दिया था। सेनेट हियरिंग्स, एफबीआई सर्वेलेंस और रिलेंटलेस इन्वेस्टिगेशंस ने हॉफा की लाइफ को एक कांस्टेंट बैटलफील्ड बना दिया। हर बार जब हॉफा एक कोर्टरूम से बच जाते, वो और भी डेंजरस बन जाते, क्योंकि उन्होंने दिखाया कि उनका पावर सिस्टम के लीगल टीथ से भी ज्यादा स्ट्रांग है। वॉशिंगटन के अंदर कुछ लोग बिलीव करते थे कि हॉफा सिर्फ एक लेबर लीडर नहीं बल्कि एक लाइबिलिटी बन गए थे। रूमर्स सर्कुलेट करते थे कि उनके पास करप्ट पॉलिटिशियंस के सीक्रेट डील्स और मॉब कनेक्शंस के एविडेंस थे, एक ऐसा आर्सेनल जो अगर रिलीज हो जाता तो पावर के दरवाजों में अर्थक्वेक आ जाता। जब हॉफा अपनी प्रिजन सेंटेंस के बाद दोबारा टीमस्टर्स यूनियन में वापस आने की कोशिश कर रहे थे, व्हाइट हाउस और मॉब दोनों ही अनईजी थे। रिचर्ड निक्सन ने उनकी अर्ली रिलीज को ग्रीन लाइट दिया था, लेकिन कंडीशन ये थी कि हॉफा लेबर पॉलिटिक्स से दूर रहेंगे। जब हॉफा ने इस प्रॉमिस को तोड़ने का सिग्नल दिया, तभी उनके डिसअपीयरेंस का काउंटडाउन शुरू हुआ। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स आज भी डिबेट करते हैं, क्या हॉफा को साइलेंस करना एक मॉब डिसीजन था या एक जॉइंट एफर्ट जिसमें पॉलिटिशियंस भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे? डॉक्यूमेंट्स और टेस्टिमोनीज अभी भी सील्ड हैं और कई हिस्टोरियंस बिलीव करते हैं कि अगर ये फाइल्स कभी डिक्लासिफाइड होती हैं, तो हॉफा का नाम सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं बल्कि एक नेशनल स्कैंडल बन जाएगा। आज हाफ अ सेंचुरी से भी ज्यादा बाद जिमी हॉफा एक पैराडॉक्स बन चुके हैं, एक आदमी जो ऑफिशियली मिसिंग है लेकिन जिसके बिना अमेरिकन हिस्ट्री इनकम्प्लीट लगती है। हॉफा का नाम हर जगह घूमता है, बुक्स, पॉडकास्ट्स, नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंटरीज और क्राइम टूर्स तक। हर नए जनरेशन के लिए वो एक ब्रांड न्यू मिस्ट्री जैसे लगते हैं, जैसे वो कल ही गायब हुए हो। पॉप कल्चर में हॉफा एक मीम बन गए हैं। जब भी कोई चीज मिसिंग होती है,
बी इट अ लॉस्ट आइटम या एक अनरिजॉल्व्ड मिस्ट्री, पीपल जोक, मे बी इट्स विद हॉफा। स्पोर्ट्स फैंस के लिए उनका नाम स्टेडियम्स और फील्ड्स के रूमर्स से जुदा है। हॉफाज अंडर थर्ड बेस, एक लाइन जो ऑलमोस्ट फोकलोर बन चुकी है एकेडेमिक्स और हिस्टोरियंस के लिए। हॉफा एक केस स्टडी है ऑन पावर, करप्शन और अमेरिका का 20th सेंचुरी लैंडस्केप। यूनिवर्सिटीज उनकी लेगेसी पर सेमिनार्स होस्ट करती हैं। क्राइम राइटर्स उनके नाम पर बेस्ट सेलर्स लिखते हैं। ट्रू क्राइम इंथुजियास्ट्स उनकी डिसअपीयरेंस को एक माउंट एवरेस्ट ऑफ मिस्ट्रीज के रूप में देखते हैं। और फिर है उनका सिंबॉलिक प्लेस इन लेबर हिस्ट्री। टीमस्टर्स यूनियन के अंदर हॉफा अभी भी एक पोलराइजिंग फिगर है। कुछ उन्हें सेंट के लेवल तक रिस्पेक्ट करते हैं, कहते हैं कि वो मजदूरों